Good morning students, this is Anil Kumar Soni and in the last class we have completed 18 question of miscellaneous exercise 5. Today I am going to start question number 19 and question number 20. Only two questions are left of fifth exercise. After that our fifth exercise is completed. Okay, we'll complete. Okay, then the question number 19 is if 1 minus 4, 3 minus 2, this is the square matrix of order 2 by 2 is multiplied with the matrix X is equals to the matrix minus 16 minus 6 7 and 2, then find the value of X. सिमिलरली इस तरह का क्वेश्चन हमने मिसकेलेनियस एक्सरसाइज में 6 नंबर का क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन और था जहां टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा था। सिमिलरली उसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्यूशन 1 minus 4 3 minus 2 is multiplied by x equals to minus 16 minus 6 7 and 2. Let this matrix assumed as a and this matrix assumed as a b. Okay, let matrix A equals to 1 minus 4 3 and minus 2 means इस मैट्रिक्स को मैंने A नेम दिया और इस मैट्रिक्स को मैं B नेम दे देता हूँ। Then and let B equals to and B equals to minus 16 minus 6 7 and 2. This is equation first. Then equation first can be written as Ax equals to B. Okay, then equation first can be written as this matrix assumed as a and this matrix assumed as a B. Then Ax equals to B. Then find the value of x और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए we will remove the matrix A. और आपको पता है लास्ट क्लास में हमने काफी क्वेश्चन किए, किसी भी मैट्रिक्स को रिमूव करने के लिए हम उसी के इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन मल्टीप्लाइंग बाय A inverse on both sides. Okay, A inverse A x equals to A inverse B and we know that किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर then we get the identity matrix and identity matrix denoted by Ix equals to A inverse B and the identity matrix follow the multiplicative identity property. उसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से के साथ मल्टीप्लाई किया जाए उस मैट्रिक्स पर उसकी मल्टीप्लिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, मींस वो मैट्रिक्स एज इट इज ऐसी की ऐसी आ जाती है। देन Ix equals to x equals to A inverse B. This is our main equation, equation number 2. ओके, मींस मुझे मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना होगा, मैट्रिक्स x किसके इक्वल है, मैट्रिक्स x इज इक्वल्स टू द A इनवर्स B। मींस मुझे मैट्रिक्स A का इनवर्स फाइंड करना है और उसको मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करना है। देन द मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट ऑफ A इनवर्स एंड B इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स x। ओके, सो मैट्रिक्स B हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बट A इनवर्स गिवन नहीं है, सो फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A इनवर्स फ्रॉम द मैट्रिक्स A। ओके, वो आपको फाइंड करना आता ही है। देन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 minus 4 3 and minus 2. First of all we find the value of determinant A. 1 minus 4 3 and minus 2. The value of determinant A is 1 को minus 2 से मल्टीप्लाई किया -2, apply the negative sign and 3 को -4 से किया then -12, then -2 plus 12 equals to 10. The value of the determinant A is 10. 2 by 2 के determinant की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, फर्स्टली we will multiply the front diagonal elements, 1 को -2 से किया -2, then we apply the negative sign and after then we multiply the back diagonal elements, 3 को -4 से किया -12 but because of negative sign minus plus 12, so the value of determinant A is 10. After then we find the adjoint A and to get the adjoint A firstly we will find the cofactor of each element and each element is replaced by its cofactor and after then we taking the transpose of this cofactor matrix. Okay, then we find the cofactors F11 F12 F21 F22. F11 is the cofactor of
A11, then we removing the first row and first column elements and the remaining elements determinant value is the F11, then -2, and we apply the positive sign -2 के साथ because sum of rows and columns are even. Then F12 is the cofactor of A12. First row and second column eliminate किया, then the remaining element is 3, but we apply the negative sign because the sum of rows and column are odd. F21 second row and first column को eliminate किया, then -4, then we apply the negative sign. So this is the 4. Negative sign apply किया, sum of rows and column are odd. F22 -2 का किया, then 1. Then adjoint of A. Each element is replaced by its cofactor -2, -3, 4 and 1, and then we taking the transpose of this cofactor matrix -2, -3, 4 and 1. This is the adjoint of A. Okay, then the value of A inverse is 1 upon determinant A, adjoint A, 1 upon determinant A. The value of the determinant A is 10. The value of determinant A is 10 and the adjoint A is -2, 4, -3 and 1. Then this is the value of A inverse. After then we putting the value of A inverse in equation second and we multiply A inverse with the B, then the resultant matrix is equals to the matrix X. Okay, then not it, then we putting the value of A inverse in equation second. Okay, from equation second then X equals to A inverse B. X equals to 1 upon 10 -2, 4, -3 and 1 is multiplied with the B, and B is -16, -6, 7 and 2. Okay, X equals to 1 upon 10. Then multiply the each row of first matrix is multiplied with the each column of second matrix. Then first row is multiplied with the first column, then we get the element of first row and first column. If first row is multiplied with the second column, then we get the element of first row and second column. Corresponding elements को multiply किया जाए, -2 को -16 से 32 plus 4 7 जा 28. Okay, first row multiply with the second column 12 plus 8. 4 2 जा 8. Then second row multiply with the first column and second column -3 को 16 से किया, 18 1 को 7 से किया 7, -3 1 को -6 2 से किया 18 plus 2. Then X equals to 1 upon 10, 3 40 50 60 20 20 and 48 and 7 55. Okay, then X equals to 1 upon 10 is multiplied with this matrix, then each element of this matrix is multiplied by 1 upon 10. 1 upon 10 को 60 से किया, 10 6 जा 60, then 6. 1 upon 10 को 20 से किया 2. 1 upon 10 को 55 से किया, 55 upon 10. Then this is cancelled by, yeah, cut by 5 11 times और 5 2 जा 10, 11 upon 2 and 1 upon 10 को 20 से किया 2. So this is the value of matrix X. Okay, simple question. इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी किया हुआ है, not it. The question number 20 is find the value of A and B. Find the values of A and B if following system of equation has infinite solution. Then there is first equation is 2x plus y plus az equals to 4, bx minus 2y plus z equals to -2, and third one is 5x minus 5y
plus z equals to minus 2x plus y plus az bx minus 2y plus z 5x minus 5y plus z 4 minus 2 minus 2. So this is our last question of exercise 5th or chapter 5th. Okay, find the values of a and b if following system of equation has infinite solution. means हमें क्वेश्चन में 3 linear equation given है in 3 variables x y and z and according to the question हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि these system of linear equation has infinitely many solutions. So in the last lectures we have discussed the same topic and the conditions which are जो कि हमने डिटरमिनेंट मेथड और क्रेमर्स रूल के अंदर कंडीशंस पढ़ी थी और डिस्कस की थी. वो कंडीशंस क्या थी? इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन द सिस्टम हैव वन यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट. एंड सेकंड वन कंडीशन इज इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3 इज आल्सो इक्वल्स टू 0 देन द सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. इफ सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन इट हैव infinitely many solution. And the third one condition is if delta equals to 0 and one of them delta 1 delta 2 and delta 3 is not equals to 0 means इन तीनों में से कोई एक 0 नहीं है, 2 भी नहीं हो सकते और 3 भी नहीं हो सकते हैं, then the system have inconsistent and system have no any common solution. but यहाँ हमें क्या given है? then the system of equation has infinite solution. then we apply the condition number 2. condition number 2 में क्या था? if the delta equals to 0 and delta 1 equals to delta 2 equals to delta 3 equals to 0 then the system is consistent and the system has infinitely many solution. then we apply the condition number 2. तो देखिए फर्स्टली और ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा क्वेश्चन? बाय यूजिंग क्रेमर रूल्स और डिटरमिनेंट मेथड. ओके, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने कंडीशंस डिस्कस की थी वो हमने क्रेमर रूल्स और डिटरमिनेंट मेथड में ही डिस्कस की थी, इसलिए इसके अंदर हम क्रेमर्स रूल या डिटरमिनेंट मेथड को ही अप्लाई करेंगे. देन सॉल्यूशन. ओके, इक्वेशन 2x plus y plus az equals to 4. this is first linear equation. bx minus 2y plus z equals to minus 2. this is second linear equation. 5x minus 5y plus z equals to minus 2. this is third linear equation. firstly we will form the delta and you know very well that delta is formed by the coefficient of x, y and z. x के coefficient से first row form होगी, first column form होगा, y के coefficient से second column form होगा and the third column is formed by the coefficient of z. then 2b5 1 minus 2 minus 5 a 1 1. this is the delta 1 in which first column is replaced by the constant which is written in the right hand side of these equations. then 4 minus 2 minus 2. second and third column as it is रहेंगे. 1 minus 2 minus 5 a 1 1. okay, then delta 2 second column is replaced by the constant. then 2b5. okay, second column is replaced by constant. then 4 minus 2 minus 2 and third column as it is a11. and the delta 3 where third column is replaced by the constant. first and second column as it is 2b5 1 minus 2 minus 5 and 4 minus 2 minus 2. okay, then we firstly solve the delta, then value of delta. firstly we will apply the condition for the infinite many solution. तो हम लिखेंगे system have infinitely many solution. system have infinitely many solution. so delta equals to 0, delta 1 equals to delta 2 equals to delta 3 equals to 0. so this is the second conditions of the Cramer rules or determinant method. first condition में delta is not equals to 0 then the system have
one unique solution and system is consistent. In the second condition, system have infinitely many solution and system is consistent when data equals to 0 and data 1 equals to data 2 equals to data 3 equals to 0. So system have infinitely many solution, then we apply the second condition of value put करें. First of all data equals to 0. Okay. Zero. Data equals to 0. The value of data is 2, 1, a, b minus 2, 1, 5 minus 5 and 1 equals to 0. Then expand according to first row. Then 2. Then removing the first one, first column elements, then minus 2, 1, minus 5 and 1. Then we apply the negative sign with the middle element and removing the first one, second column elements. Then the remaining elements, the determinant value is b1, 5 and 1. Then plus a, removing the first one, third column elements. Then the remaining elements is b minus 2, 5 and minus 5 equals to 0. Because the condition for the infinitely many solution is data equals to 0. 2 minus 2 minus minus plus 5 minus 1 b minus 5 plus a minus 5b plus 10 equals to 0. 5 minus 2 3 3 2 जा 6 minus 1 को b minus 5 से किया minus b plus 5 a को किया minus 5 ab plus 10 a equals to 0. Then 10a minus b minus 5 ab, 10a minus b minus 5 ab, 6 plus 5 11 plus 11 equals to 0. So this is equation number 4. Okay. Then the second condition is data 1 equals to data 2 equals to data 3 equals to 0 means all of data are equals to 0. So firstly we will equals data 1 equals to 0. The value of the second condition is data 1 equals to 0. The data 1 is 4 minus 2 minus 2 1 minus 2 minus 5 a 1 1 equals to 0. Okay. Then expand according to the first row. Four, then we remove the first one, first column elements, minus 2, 1, minus 5 and 1, minus 1, first or second column, minus 2, 1, minus 2, 1. Okay. Then plus a, first one, third column, minus 2, minus 2, minus 2 and minus 5 equals to 0. Firstly, we will multiply the principal diagonal element minus 2 को 1 से किया minus 2, apply negative sign and minus 5 को 1 से किया minus 5, then plus 5, then minus 1, minus 2 को 1 से किया minus 2, minus sign and minus minus plus 2. Okay, minus 2 को 1 से किया minus 2 और already negative sign apply हो गया है, then plus 2 plus है, minus 2 को minus 5 से किया plus 10, apply negative sign and minus 2 को minus 2 से किया plus 4 equals to 0. 5 minus 2 3 और 3 को 4 से किया 12, 2 से 2 कट 0, then 0. यहाँ पे मैं 4 5 minus 2 3 plus 8, then this is 6 equals to 0. 12 minus 0 plus 6a equals to 0. 6a equals to minus 12, then a equals to minus 12 upon 6.
a 6 2 12 देन -2। अब देखिए आपको डेटा 1 इक्वल्स टू 0 के इक्वल रख के आपने सॉल्व किया, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a and we putting the value of a in equation 4, then we find the value of b। तो आपको देखिए अब डेटा 2 और डेटा 3 को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग की टू कंडीशन से ही हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो गई है। डेटा 1 को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करने पर then we find the value of a and the value of a is putting in the equation 4, then we find the value of b। okay, then putting the value of a in equation 4, the equation 4 is 10a minus b minus 5ab plus 11 equals to 0, putting the value of a and the value of a is -2। 10 को -2 से किया -20 माइनस b, -5 को -2 से किया +10b plus 11 equals to 0, -20 plus 11 -9, 10b minus b plus 9b equals to 0, 9b equals to 9, then b equals to 9 upon 9, then equals to 1। so the value of b is 1 and the value of a is -2। so this system have infinitely many solution, and if the system have infinitely many solution, then the data equals to 0 and data 1 equals to data 2 equals to data 3 is also equals to 0। then we apply the second condition, जब हमने डेटा को 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व किया, then we get the first equation। फिर हमने डेटा 1 को 0 के इक्वल रख के सॉल्व किया, then we get the value of a equals to -2 and putting the value of a in equation 4, then we get the value of b। so chapter number 5th inverse of matrix is completed। तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, नोटेड।